I would start with advising that when we discuss about non-parametric test, as you all know better, this is part of testing of hypothesis, which we started in semester 1. So this is just extension of the concept which we had started in semester 1. So theory portion concept of testing of hypothesis, which we had covered in semester 1, should be prepared and should come as objective question. So today, in that regard, I'll just be discussing something, and you just tell me if I had covered in your section. I don't remember, as I am taking for 5 sections. I'm sometimes forgetting if I have shown this PPT. Some of you just help me if we have discussed this sampling. This semester last class क्या किए थे? PLE, Snehal. Sir, SPSS किए थे. SPSS last class. Oh, this slide I think we have missed. I think other sections I have covered. Anyway, here we start. Sambit, Tina, and Snehal and all others just cooperate, participate. Stop if I'm going faster, stop if I'm not clear. So we'll be discussing today concept of sampling. As you guys recall what we had discussed in last semester, sometimes we have to and we must have to resort to checking a sample just to know something about the population, which is mostly unknown. So sampling is taken for inferring or inference about the population. So this is the basis of statistical inference. When I'm telling inference, inference about what? On what? About the population. You are telling something about the population, which you are forming idea when you check a small sample. So this is the purpose of checking sample. Okay. Now, these are the points which we have discussed, why we will be going for sampling. And as you all know, that if you test a large sample size is bigger, then that is better, more accurate. And given a choice, if you have got money, time, patience, you can take as big a sample which will look like a census survey. But you should not forget, even if you have got time, money, and patience, whatever, sometimes, some exceptional cases, you cannot go for census method. What are the cases? Sambit, then Tina. So when the case of destruction, when destruction is one. Second. Yes, sir. Second, sir, unreachable population, Yes. like deep Not ocean. accessible, you don't know, so you cannot go because you don't know. Okay. So the concepts will be quickly going through, and whenever I'm just emphasizing on a particular point, what you should mean that this is important from an exam point of view. Say, for example, it is asked in exam, give an example of infinite unknown population. I think you should be in a position to give that example. Okay, as Sambit told just now. Please remember, population can be either finite or infinite, but sample is always finite, small. Okay, finite. And if you, the way you draw a sample from the population, that is called sampling method or insert sampling. What is sampling frame? Anybody volunteer? Raise your hand. Snehal. The sampling frame is that collection from which we can make the sample. Is that portion of the population from which we can withdraw the sample. Okay, clearly the same answer or something else? Almost same. It is, both of you are correct, but better if you can write the complete list of the entire population from which you are drawing the sample. That is sampling frame. And
once you take the sample, then you go for sample testing or hypothesis testing. Now, coming to the different methods, broadly, all sampling methods can be divided into two dichotomous categories. One is probability sampling and another is non-probability sampling. Who can tell what is the basic difference between the two, probability sampling and non-probability sampling, in a very simple way? Anyone? Tina? So in probability sampling, the units are randomly selected. Okay, Abhijit? Sir, in probability sampling, each of the data points have equal probability of being selected. What is the difference between the two? So in probability sampling, each of the data points have equal probability of being selected, but in non-probability, that is not the case. Anisa? Yes, so in probability sampling, every unit has अरे equal दोनों chance में to. क्या अंतर है बोलो ना, एक शॉर्ट सिनोनिम लेके चांस चॉइस, ये दो सिनोनिम सुना है Yes, sir. अरिजीत? सर एक तो वो रैंडमली सिलेक्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी, और नॉन प्रोबेबिलिटी में तो मतलब जो डेट मतलब जो हमको चाहिए उस वजह से हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जिसमें बायस नहीं करते। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, अगर आई एम यूजिंग द वर्ड अगर, तो फ्यूचर में शादी करना चाहेगा, अगर ये इज अ मैटर ऑफ चॉइस और चांस? The choice. So probability chance से related होगा and non-probability sampling it's a choice. It doesn't depend upon. Yes. Snehal madam, suppose you are going to a shop to purchase a dress for your younger sister. Will you pick up randomly or purely selective choice? So purely selective, so it will be non-probability. Okay. So why I am just telling all these things, Raslin? Whenever you are getting one indirect question in exam, which is better, don't jump to the conclusion that ये better है, वो better नहीं है. Dono, both have their own pros and cons. Depending upon the requirement, we have to select one, prefer one over other. Okay, that's what I wanted to say something. Right, Satyam Bhuya. So let's start with the non-probability sampling, and the most favorite is convenience sampling. Even in the QT project or other project, whenever you are sending the questionnaire, you send to your known contacts. Why? Because of convenience. When you are sending to your known contacts, it is not randomly done. It's a selective kind of thing. Okay. So this is convenience sampling. Next, जैसे हमने बोले कि you are selecting a dress or selecting a candidate, you have got a purpose and you apply judgment. So that is part of judgment or purpose sampling. Next, if you have some reservations, say for example, recently we had Panchayat Raj election, municipality election, where you have reservation for women quota, all those things, you cannot do it freely, randomly. You have to have some quota or reservation. Last one is a bit important for you. It is snowball sampling. Anybody who can quickly suggest what is snowball sampling with example? Abhijit. Sir, it is like a tree kind of structure where you will select one person and that person will select two person. Each of the next two person will select two person each, just like that. Okay, Pierre, would you like to supplement something? Though Yes. Abhijit told correctly, yeah. Yes, sir. As it goes from 1 to 2 and it increases like this, that's why it is named as snowball. Abhijit, any example? Or Yes, Snehal? sir. Like chain marketing. Okay. Any examples, Snehal? So example सर, जैसे मुझे सर किट के बारे में सपोज पता लगाना है, तो मुझे रेफरेंस के थ्रू मैं जाऊंगी सर, तो दैट रेफरेंस विल बी कंसिडर्ड इन लाइक स्नोबॉल सैम्पलिंग. जब डायरेक्ट डेटा नहीं मिल पाता है तो वी यूज रेफरल्स इन दोस केसेस. Fair. Affiliate marketing है ये. हाँ, Tarun, ठीक. So this should be explained properly if it comes as a objective question.
Now, next coming to probability sampling, as you can guess, first, foremost, and simplest is called simple random sampling. In simple random sampling, all units of the population have chance of getting selected. Okay, Tathagat, you have anything to say? Yes, sir. I have a question actually. Sir, Oh. in case of like Rukja, as you said, Rukja. there are two types of Rukja. sampling. One is convenience. Rukja. Yes, sorry, sir. Don't forget to question. By the time Tathagat asks me question, I ask some of you, PLE, Snehal, Sambit, search Google, maybe your laptop or mobile, random number table. Okay? खोज के रखो. Over to Tathagat. Yes, sir. Sir, as you said, there are two types of sampling. That is one probability here in this case, and convenience sampling. So there are chances of having a sample in which there will be mixed amount of like convenience as well as probability sampling. So in that case, we need to like how we can't like distinguish between probability and convenience sampling. Give one So in example. that case, Give one sir, yes, example. sir. Whenever we are sending like market campaign to our friends, like there are some kind of friends which are like convenient for us, and some kind of people who are not like convenient. So in this case, so that's PLE is Sir, convenient. I can give an example. PLE is very arrogant, and you are not sending questionnaire to her. यही बोल रहा है. No, sir, I'm not अरे arrogant. सुन रहे. सर मैंने- जैसे तथागत स्टूडेंट हाँ। इंग्लिश का मेल देख के सबको भेज दे रहा है डाटा चोरी करके, और हम लोग अरे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं. no, Tarun, सुन रहे. Now let us take the spirit of the question of Tathagat जो बोल रहा है. Anybody who has understood the spirit of the question of Tathagat, अब थोड़ा let us respect the question. Abhijit, you have got anything to say or question? No, sir, I was trying to answer Tathagat's question. बोल. मतलब you asked for example. He is asking, you asked to give an example. no. I am not asking for example. No, sir asked, not you. Yeah. Sir asked to give an example of convenience and simple random sampling. So I want a blue shirt. So I'll go to a shop, I'll ask for a blue shirt, but 1000 blue shirt होंगे, उसमें से मेरे कोई एक चलेगा. So here convenience is my blue shirt, but out of the 1000 blue shirts, I can get any blue shirt. अरे यार, short selection, how it will be convenience? ऐसे थोड़ी होता है. Really, your dress selection will be convenient sampling. No, sir. I don't agree, Abhijit here. Now, coming back to Tathagat's question, if I have understood his question, कभी कभार दोनों probability non-probability mix हो सकता है क्या? Possible, but the way Tathagat told is not correct. He is suggesting when you are sending questionnaire, जो मिल रहे हैं, you are sending it, it is convenient. But difficult में मिल रहे हैं, it is not convenient. He is telling that way. Are you telling that way, Tathagat? No, not that way, sir. Then, Sir, as I said, like how can we distinguish between like convenient and probability sampling if there are a mixed type of data which what we is the have? definition of probability sampling? Probability, it is like the random. We can अरे put अभी तो तेरे predecessor में define किया ना, हर एक का chance बनता है getting selected. Do you agree, accept or not? yes, sir. Now in convenience sampling, when you are sending questionnaire, what is the target population? एक सर्वे कर रहा है तथागत, न जाने कितने potential respondent होंगे in lakhs, crores, say mobile user. You name a thing, you will have lakhs. Okay, सारे टारगेट पॉपुलेशन का लिस्ट देख के सिलेक्ट किया था क्या? नहीं. सैम्पलिंग फ्रेम था क्या? नहीं. अगर नहीं है तो ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग होगा. हर एक को हम इंक्लूड नहीं किए सिलेक्शन के लिए. तथागत, just to save time, don't get satisfied. Let me complete all the sampling. Please ask me the question again if indirectly you are not getting the answer. ठीक है? Okay, sir. मेरे ख्याल में तुझे indirectly answer शायद मिल सकता है indirectly. Okay, don't forget. Now अभी simple random sampling जो है, this is again of two type. One is with replacement, another is without replacement. What is the difference between with replacement, without replacement?
We are अगर keeping back. अगर मिर्जा सुन रहे, अगर मिर्जा तो स्विच ऑन कर रहे, आई एम मिसिंग यू, अगर तो कहाँ रॉकेट में जा रहा है कहीं? Suppose for university from MBA1 we want to send two representatives, one for athletic society, another for cultural society. सारे सुनो मुझे. Suppose Mirza has represented All India Athletic Meet. So I think we all agree that he is the best person. We are nominating or selecting him. ठीक है? Same Mirza person ऐसा भी हो सकता है. Culturally he is the best person among us. आप लोगों ने डिसाइड किया नो हार्म इफ यू सेंड मिर्जा अगेन टू द कल्चरल सोसाइटी, अगर आपने डिसाइड किया. सो इन दिस सिलेक्शन फर्स्ट मिर्जा को सिलेक्ट किया आउट ऑफ 350 स्टूडेंट्स, देन यू आर पुटिंग बैक हिज रोल नंबर और चीट, अगेन सेकंड सिलेक्शन मिर्जा इज गेटिंग सिलेक्टेड. सो व्हेन दिस सेकंड और सक्सेसिव सिलेक्शंस आर ड्रॉन by replacing the previously selected person, that is called what, Snehal? With replacement. Yes, sir. अगर हमें रिपीटेशन मंजूर नहीं है, that is called without replacement. Uniquely करेंगे तो, ठीक है. Now my question is simple question: to Tathagat, to Abhijit, and to Mirza. Tathagat, don't confuse with your old question. अभी 5 मिनट के लिए भूल जा. मेरा simple question, new question is: suppose there are 300 students. Out of 300 students, I want to select 10 students randomly applying simple random sampling. कैसे करेंगे? Who are those 10? तीनों में से कोई तो बोलो, नहीं तो others raise your hand. सर कोई भी 10 उठा लेंगे. That is simple. कोई भी random 10 उठा sampling. सकते हैं ना. That is not simple random sampling. यही क्वेश्चन अगर मैं PhD स्कॉलर में पूछूंगा, 50% of them will be confused. MBA स्टूडेंट्स को छोड़ो, PhD स्टूडेंट्स का भी क्लैरिटी नहीं है. कैसे कोई भी उठा लोगे? इज इट रैंडम? कोई भी उठा लोगे तो मतलब ये तो नहीं हुआ ना, यू हैव गॉट बायस. कोई भी उठा लोगे मींस हु आर द कोई? सर जजमेंट Sir, वाला यूज करते हैं. लॉटरी सर. हाँ, अभी बेटा अभिजीत इज ऑन ट्रैक. सो व्हाट इज सजेस्टिंग, इफ इट इज 300 स्टूडेंट्स, 300 जो है बच्चे जो स्टूडेंट्स है, 300 चीट्स को रखो एक बाउल में, randomly pick one, second just note it down, so you don't have any bias. Are we not giving chance to everybody, Tina? Yes, कैसे sir. दिया? कैसे दिया? Because the chance for everyone You are is one. putting cheats for everybody. That is called lottery method. ये lottery method अगर हम करेंगे, it's not scientifically recorded. ठीक है? So that's why what is done, mostly a random number table is used for simple random sampling. Has anybody got random number table? किसी को मिला? Share करो screen. अरे, has anybody downloaded? सर डिसेबल्ड है. सर डिसेबल्ड है. अरे अभी कर दिया ना? जी सर. अभी जिस तरह नेटवर्क स्लो है, आएगा शायद. हाँ, एक ही करो, मे बी लाइक ऑन दी राइट एक्सट्रीम, इसको सिलेक्ट करके बड़ा कर. यस सर. हाँ, वही क्लिक कर. इसको डबल क्लिक कर देना, हो जाएगा. क्लिक कर दो, हो जाएगा. ये खुल रहा है. हाँ, अभी सुनो. तो दिस इज कॉल्ड रैंडम नंबर. ये क्या कर रहा है? सर डाउनलोड कर दे रहा हूँ. तो अरे आप खुल जाएगा. जल्दी करना, हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, दिख रहा है. दिख रहा है. सुनो. So if you check any column, any row, it is generated in such a way by computer. हर एक digit का, wow, very good. हर एक digit will be repeated same number of times. Okay. Now say, for example, you have got 3-digit number, row numbers. You can take first 3 digit of the first column. Say 365, 461, 318. Are you able to see? So this is called random number table. So ये ही select होगा.
मिर्जा कभी सुना है? भूटान लॉटरी, नेपाल लॉटरी कभी सुना है? नाम सुना है? नहीं सर, इंडियन लॉटरी से काम। अरे जो है ना, ये जो छोटा छोटा जो कंट्रीज है, they actually earn lot of profit on lottery system. India में ban है शायद, I'm not sure. Now as a lottery is banned, but in Bhutan, Nepal, it's not banned. They earn lot money there, and mostly don't mind. Many people from West Bengal, Bengali, they buy and they have got a craze buying lottery tickets, and they hope that they will be earning the dream gift kind of thing. So what they do, so they declare, so this is the column we have selected. So first number is first prize, second number is second prize, like this. So anybody is sitting at a distant place can verify कि भाई next कौन होगा क्या होगा. Okay, so they do not have any control or bias. Are you getting my point? Okay, so stop sharing. We don't have much time, Abhijit. Let me share my experience. I'm just telling you, when I completed my post-graduation in statistics, those days, based on marks, we used to get jobs. So my first job was with central government under Minister of Planning. The organization is called National Sample Survey Organization. So हमारा role था to go to villages, rural villages, to collect socio-economic data. So how to select the houses randomly? So they will be giving some random number table like this. Those days, computer were not there. For different company used to print this table, particularly Tippett's random number table is one example, which table printed book was given to us to each investigator. Suppose I am the investigator, I have gone to a village, I have selected house number 37, house number 107. Suppose PLE is my boss. Once I have collected and returning back to office, she can go and check, inspect whether these houses have been visited or not. She will also having the same thing so that she can verify. Are you getting my point, Nikita? So this is for cross verification. We can have a scientific method of simple random sampling. Abhijit, are you getting it? जो पहले बोला था ना, randomly उठा लेंगे. So randomly उठा लेंगे मतलब verification का scope नहीं रहेगा. ठीक है? फिर अगर जैसे आप बोले रोल नंबर 3 डिजिट का है तो वैसे फर्स्ट 3 डिजिट कैन वी टेक दैट फॉर अ सिंगल डिजिट नंबर आल्सो, मतलब रोल नंबर सिंगल डिजिट हो रहा है तो मैं फर्स्ट डिजिट लेके चल रहा हूँ. हाँ नहीं, सिंगल डिजिट लेंगे तो सपोज यू हैव गॉट फर्स्ट ईयर में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 320, 350, around 350 or 340. Yes, sir. Okay, so how will be taking a single digit number? So if you take 3 digit number, say for example first one is 389. Okay, what you can do, you can have mod 340. So if you do minus, that is, say for example it comes to how much? 49. This roll number is selected. You can define a formula that is easy. Okay. Yes, Let's not waste time. So simple random sampling, I have just clarified how it is selected. Let's move. This is a very small thing. Systematic sampling, I think you may be remembering. Out of the whole lot, only the first one is selected randomly. Baki sab automatically, you go on adding a fixed number, second unit, third unit gets selected. Okay, simple. एक line में define करो, that will be more than enough from your exam point of view. Science, are you getting my point? What I am advising? Don't waste much time. If you can write one sentence each, that will be fine. Stratified random sampling. Who remembers that? Why and when we should go for stratified random sampling? This is important. Any volunteer? So when we are trying to get samples from different strata or different groups, we should go for it. You will not get good mark. Tina. So when the population is heterogeneous. Yes, clearly you have to use that word. Only when you feel Yes. population is not homogeneous, heterogeneous, then we stratify into smaller group which are homogeneous. Those two words clearly should come. Heterogeneous, homogeneous should come, or else you will not get full mark. Sure. Okay, this is important. And moving next is cluster sampling. Suppose you find the sampling units
are highly concentrated in small areas, a particular area. Say, for example, Sambalpuri sari or Pata sari, whatever. Suppose you know that these areas, the weavers are mostly found. In that case, why to select randomly all districts? Not required. Go to that area where the weavers are there. They are in clusters. So if you are taking those areas as clusters, that is called cluster sampling. Last one, multi-stage area sampling is one when you have got a huge geographical area for coverage and you divide the geographical area stage by stage. Say, for example, state, then district, then blocks. Stage-wise, if you divide and then select randomly, that is called multi-stage area random sampling. All of you should remember this is part of random sampling. Okay. Before I move to the next one, I am not sure, Tathagat, have you by chance got some hint? No. Yes, sir. Sir, little bit. Okay, so we can take it off one to one if you are not happy about your question. Now, on estimation, I would advise you not to take much pain. You can revise this chapter within just 5-10 minutes. You may get a question or may not get question, maximum one question. So इसीलिए selectively just you write in your own word. Now, if I ask you why estimation is particularly useful for young managers like you, I can give one example. Say, for example, should we give credit to some select customers if you are owning a shop? Should we give a loan to a prospective customer if you are a banker? Suppose you are joining a bank. If you give a loan, Sambit, what is the risk for you? Will he able So to the pay back loan or taker will may not pay pay or back. may not pay. If the party is not refunding, you are responsible. Yes, sir. Bad loan ho jayega, to you are your fault. Okay. So Mirza kya karega? If Mirza is bank officer, loan dena band kar dega. Mirza, should you stop giving loan? No, sir. Because you cannot, because from loan banks earn profit. So आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ये दे सकता है नहीं दे सकता है. So that kind of some advanced calculation estimation can be done, maybe like referring civil score, whatever. You have to use some quantitative figures also. Now, as I come to types of estimates, very briefly, it can be either point estimate or interval estimate. इसको भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं. Now, I would ask you to just have a serious thinking. अगर आप interval estimate दे रहे हो, suppose मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, स्क्रीन विजिबल, इसका चांस है 68%. चांस का मतलब गारंटी, और रेंज ये है यहाँ से लेके यहाँ तक. Guarantee is more than 99%. Can I ask you all, if I am asking you to compare first graph versus third graph, which kind of estimation is better according to you? Comparing between first and third. So second is better. So the first, third, First, third. सर पहला वाला बेटर है So सर क्योंकि first is डिफॉल्ट better. डिफॉल्ट Yes, sir, करने के first one is- चांसेस कम है. First डिफॉल्ट one करने is के better, sir. You are in a divided house. Some of you are telling first, some of you are telling third. I don't know whether you know the correct answer. Let me tell you. Really, I am not remembering what you have told. Now, if the range is wider, sometimes it is not handy, it is not tenable, it's not practically useful. मान लो you are predicting the wind speed of a cyclone. आप बोलोगे wind speed होगा and I am giving you 99% confidence, लेकिन ये 100 से लेके 200 किलोमीटर तक कुछ भी हो सकता है. If you are telling this, your preparation management cannot be very authentic. Similarly, suppose you have developed a missile, you are telling that yes, it can travel up to 500 miles, but it can also maybe like 200 से लेके 700 तक जा सकता है. You are hitting one country and it is going mad and going to another country. This is bad, na? So we should not be
running after this guarantee 99% if it is too wide. And this is also too small. So that's why ideally a middle path. Second one is preferred. Okay. ज़्यादा नहीं है और confidence भी कम नहीं है. Okay. Now coming to exam point of view, what type of question you are setting, Tina madam? You are the paper setter na. ये confidence limit interval में से कुछ question होगा. सर ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं. ये देखो, suppose you know this, construct 95% confidence limit. आपको mean दिया जाएगा. Suppose mean is 70 and standard deviation is 1.5. The question is calculate or construct 95% confidence limit. No prompting. I'll ask one by one. Varanya Kara, you are there. Varanya, Soumya, Manisha. Yes, sir. So, but I'm unable to understand the question. Can you repeat? अरे म्यू और सिग्मा मिलेगा क्वेश्चन में. And question is construct, find or calculate 95% confidence limit. We are making a revision class now. Soumya, you are there? Yes, sir, I am here. Answer तो बोलना. Only one. Any volunteer? Don't prompt. Only raise your hand. तरुण सो गए रे? गुप्ता साहब. नहीं सर, वो कहाँ पर हो? दुकान में? नहीं सर, एक घर. आंसर क्या होगा? मिर्जा, अभी सड़ंगी वर्ते यार, सड़ंगी. Yes, sir. क्या होगा आंसर? अरिजीत बोल. सर 70 प्लस 2 into 1.5. प्लस से क्यों शुरू करेगा? You start with a curly bracket. ये लिखो 70 माइनस से शुरू करना. सॉरी 70 minus 2 into that is 3 होगा. कहाँ 3 होगा? 1.5 into 2 होगा ना? कहाँ 2 है? क्वेश्चन क्या है? 95% है ना? 95% बोला था. 1.96 होगा. अरे तो दिख रहा है नहीं दिख रहा? Oh sorry 1.96 sorry. ऐसे ही तो करेगा एग्जाम में. sorry sir. यार तो ओवर कॉन्फिडेंट है. ये रहा लोअर और कमा डालो, फिर लिखो प्लस 70 प्लस 1.5 इंटू कितना? क्लियरली 1.9. 1.9. ये दो ही नंबर लिखो, कर्ली ब्रैकेट डालो. 2.94. So you write 72.9. two numbers and you get 2 marks. Taslin, easy or difficult? सर इजी. क्यों नहीं बोली? सर मेरे से पहले ही बोल दिया तो क्या करते. अभी ये जो है अगर क्वेश्चन में 99% आएगा तो व्हाट विल बी मल्टीप्लायर? 2.58. 2.58. याद रखो. ठीक है. मिर्जा क्यों नहीं बोला रे? सर मैं वो कैलकुलेट करके निकाल रहा था, तब तक आप आगे बढ़ गए. सर स्टेप्स तो बता दे. हाँ बोलो. सर बोल रहा हूँ सर, हम लोग तो यहाँ पे मतलब बोथ साइड 2 सिग्मा ले रहे हैं, तो 2 सिग्मा 2 into सिग्मा. अरे 2 सिग्मा कहाँ लिखा है मैंने? अरे यहाँ पे नहीं लिखे हैं, मतलब वो रेंज लेते हैं ना 95.5% का. सुन रहे अगर इसको राउंड फिगर कर रहे हैं 3 सिग्मा 2 सिग्मा, ये थोड़ा फ्रैक्शनल हो जाता है. ठीक है. ओके सर. ओके. ये इसको अगर हम एग्जैक्टली 99 करेंगे तो इसको फ्रैक्शनल करना पड़ेगा. ओके सर. फ्रेंड्स मालूम हुआ? गुड. सो लेट्स मूव एंड now hope this we had covered, and this will skip here, and hope you all remember this particular table. Now for sample testing, the issue is we have access only to what, Tina? To the sample. Only sample. हमने population नहीं देखा है. सैंपल जो मिला उस हिसाब से हम कंक्लूड करेंगे.
सैंपल सही मिल सकता है, सैंपल बैड मिल सकता है। अरिजीत, अगर सैंपल बैड होगा तो डिसीजन क्या होगा? सैंपल बैड होगा तो रिजेक्ट होगा ना। रिजेक्ट होगा। अगर सैंपल सही मिला तो एक्सेप्ट होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हमने नहीं देखा है, इट कुड बी गुड, इट कुड बी बैड। ये दोनों को अगर मिला देते हैं, सो वी हैव गॉट 4 टाइप ऑफ सिचुएशन। होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर, हमने एग्जांपल दिए थे। Now just to save time, I'll be picking out 4 volunteers. First, situation 1, Nikita. Situation 2, Abhijit Beura. Situation 3, Anisha. And situation 4, Varanyakar. Get ready, explain one by one. कौन situation 1 को बोलेगा? किसका नाम लिया मिर्जा मैंने? निकिता। अरे स्टार्ट करना जल्दी, टाइम सेव कर, नहीं तो पास कर। प्लीज डोंट वेस्ट टाइम डियर। PLE टेक ओवर। Yes, sir. Situation 1 is when our population is good, but we have got a bad sample. That's why type 1 error will be there. एग्जाम्पल बोलना। So example, थोड़ा time दीजिए sir. I'm नहीं, thinking. टाइम नहीं है, जल्दी बोल। सर बैट्समैन का एवरेज निकाल रहे हैं, उसमें सर अच्छे एवरेज बैट्समैन कहाँ है? तू स्टैटिस्टिक पढ़ रहा है क्या? एवरेज निकाल रहे हैं। सुनो रे, एक दिन क्या हुआ, PLE was not in a mood। एग्जाम्पल ऐसा ही देना एग्जाम में। And the recruiter asked some tough question 2-3. वो 2-3 question PLE could not answer. Mirza, you are recruiter. What you will do? सर मैं सपोज करूंगा कि सर उसको Because she is your friend, support करूंगा। सर विजन 2 बार चांस दे रिजेक्ट कर देगा on the basis of like Because she is not answering or rejecting. But we all know PLE is a good student. Only those 3 questions she could not answer. Okay. Now we all know that the company missed taking a good candidate. So this is error. ये होना नहीं चाहिए, ये भी हो सकता है कभी कभार, ठीक है? So you can give so many examples. This way you have to explain. Who is to explain situation number 2? जल्दी करो। So may I? हाँ, अरे Sir, the second. बाकी लोगों को चांस दे रहे। I had told somebody ना, कौन किसको बोला था? निकिता, सिचुएशन 2 किसको बोला था रे? मुझे अभिजीत, बोल नहीं तो पास कर। सिचुएशन 2 हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि सैंपल साइज गुड है और ये बोला क्या, Population also good. PLE answered all questions and actually she is also good. It's a good decision selecting a good student, right? Yes, yes. Who is to explain third situation? Sir, sample is not good and the population is also not good. Just the example which you gave of PLE, suppose if she is not good and she's not performing good, so we would reject. It's a correct decision of rejecting a batsman. Correct decision of rejecting a batsman. ऐसा ही लिखना एग्जाम में, ठीक है? Thank you, Anisha. Who is to explain fourth situation? Me. जल्दी बोल। Sir, it will be a false negative. हम लोग ये accept नहीं करेंगे. For example, अगर we are doing a test for a patient, the test came as negative, but that patient is infected. तो वो negative false negative होगा report. फिर से बोल. Sorry, I could not get you. Sir, if we are testing a patient, his report came in negative result, but that patient is already infected. So the report is wrong here. So there is error in the report. Okay, good. Any other example? Good, very good example. Abhijit? Sir, I have a doubt. I think this should be false positive, right? Because the sample is good, but the population is bad. No, वही तो बोला, टेस्ट साइज किया, वो नेगेटिव मिला, वही बोल रहा था। नहीं सर, नंबर 4 तो sample is good and population is bad ना? अरे इसीलिए तो I am asking for one more example ना। टेस्ट में आया कि ऐसा हो मेरे को गया मलेरिया नहीं है, बट मेरे को मलेरिया था। सर, हो रही गई कि जैसे मेरे को कोविड नहीं था लेकिन मैं पॉजिटिव हो गया। नहीं रे, सुनो।
मान लो आई एम सफरिंग फ्रॉम डेंगू, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, डेंगू कभी कभार डिटेक्ट नहीं हो पाता है। तरुण सुन रहे, अनम्यूट करके रख। Maybe like evening time, your symptom is something, morning time symptom is something. Suppose while giving the blood test, it is found as okay. Okay. Yes, sir. One who is testing, that fellow has done judiciously. उस टाइम ठीक था, बट लेकिन फायदा नहीं हुआ ना, डेंगू पेशेंट को डेंगू आइडेंटिफाई नहीं किए। So this is bad. ठीक है ना? So this could be a good example, but I just wanted a simpler example, Baranya, so that there is no confusion. Baranya, as you could understand, even some of your friends also were a bit confused. So better if it is in exam, try to give simpler example so that your poor teacher, hope you know who is your poor teacher, the teacher understands simply and you get mark. Okay. Now okay. I can give you, say for example, I'm so sorry, PLE को example ले रहा हूँ हर एक बार. Suppose PLE is not that good. Suppose you are good. Suppose you are not that good. रट के गई थी 2-3 क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रिक्रूटर ने पूछ लिया, so फटाफट ठसा ठस आंसर दे दी. So she was selected, but actually after joining, they came to know that अरे भाई ये तो ठीक नहीं है. So Abhijit, are you now okay with the example? Yes, I'm asking कि मतलब थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि false positive क्या होता है, false negative क्या होता है, डाउट है. हाँ, उसको छोड़ देना, उसको छोड़ दें. ये जो एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल दिया इसको दे सकता है. Now this is also term, these two errors, producer's risk, consumer's risk. Who can explain why it is called? One type 1 is producer's risk and second one is called consumer's risk. How you are going to explain if it comes in exam? Abhijit, can I give to Anisa? Chance, Anisa. Yes, sir. So producers risk इसलिए because पहला वाला sample, पहला वाला population is good, but we are rejecting on the basis of the sample. Suppose I am the producer and I am producing some batch of medicines और वो sample खराब निकलता है तो पूरा population ही reject हो जाएगा और वो मेरे लिए You are not sending to the market, so it's a huge loss for the producer or the manufacturer. Wow. Yes. So what Anisa told, better to give some manufacturing example like this. Wow. And consumer risk, Snehal? जब जैसे अनीशा एग्जांपल थी तो उसी तरह सपोज हम जो हमारा पॉपुलेशन जो भी मैन्युफैक्चर की वो खराब है बट सैंपल ठीक है तो हम लोग उसको लाइक मतलब कस्टमर्स के लिए भेज देंगे तो जरूर मतलब पॉपुलेशन तो पूरा खराब है तो कंज्यूमर का रिस्क है जो भी खरीदेगा क्योंकि पॉपुलेशन कंज्यूमर्स में एग्जांपल दूं सर, वी गेट कंज्यूमर को ठीक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि पॉपुलेशन खराब है उसका रिस्क ज्यादा. सो ये क्वेश्चन बन सकता है. ओके, नेक्स्ट वी कैन लीव इट हियर. कमिंग स्ट्रेट टू द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो हमने करवाए थे सेमेस्टर 1 में, आज शुरू किया मैंने, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखो. These are called parametric test because this is from the family of hypothesis testing. जो second semester हम किए थे non parametric, but it starts from parametric test. इसमें से selected question एक या दो मिल सकता है. Now let's skip this and move to the concept of one tell and two tell. Hope you have not forgotten. This is a probable objective question. Who can say with clarity, with example, difference between one tell, two tell, and difference between left tell and right tell? Volunteers? Tathagat, then Sambit. Yes, sir. So talking about one tell and two tell test, like in talking about fridge. So in fridge, if our temperature is going to like rise from the temperature which we need to maintain our food, so it will be like the one tell test. अरे तो ऐसा एग्जांपल दे रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा, सिंपल एग्जांपल देना. क्या क्रिटिकलिटी है?
सर मतलब घर में जैसे खाना बनाते हैं तो खाने का क्या होता है, मतलब एक टेम्परेचर में वो सही लगता है और उसके बाद जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो खाने का, तो क्रिटिकल रीजन किस साइड पे है? तो मतलब एक हुआ ना, मतलब वांटेड ये टेस्ट हुआ पर है लेफ्ट critical। साइड, लेफ्ट साइड। अरे क्लैरिटी नहीं होगा ना, कंफ्यूजन होगा ना, थोड़ा बेटर दे रहे एग्जांपल। टीना, देन रसलिन। Yes, sir. So, sir, suppose हम लोग bike mileage, मैं एक bike manufacturing company हूँ, and I'm claiming that my bike will have a mileage of more than 60 माइलेज, kilometers. सो इट इज वन टेल और टू टेल? One tail, sir. लेफ्ट और राइट? It will be left. हाँ, ये क्लियर है। राइट टेल का एग्जांपल दो रसलिन। रसलिन, Pollution, संबित, pollution कहिए। Yes, sir. Sir, global warming. right till, hello. हाँ राइट टेल का एग्जांपल देना। हाँ, राइट टेल वो होगा जहाँ जब क्रिटिकल राइट साइड में आएगा, उसका एग्जांपल ये हो अरे सकता है कि बेटा, जैसे टीना बोली, जो बाइक का बोली वो वैसे। यस, कंटिन्यू। नेटवर्क प्रॉब्लम है। संबित, टेक ओवर। So global warming can be example of Reitel test. एक रेंज से ज्यादा होगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो क्रिटिकल रीजन राइट साइड पे रहेगा तो वो Reitel टेस्ट होगा। ओके, टू टेल टेस्ट का एग्जांपल टीना, नेक्स्ट क्लियरली। Rainfall. If it's too बहुत ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम है, कम होने से भी So all प्रॉब्लम। of you try to have simpler example and prepare yourself, ठीक है? ये एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे। Thank you so much. And now let's have a recall of the family of test formula which you had covered. Mostly large sample test या T और chi-square test, ये तीनों हमने करवाए थे और F test सेकेंड सेमेस्टर में किए थे। होप यू आर नॉट फॉरगॉटन एंड होप यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों में क्या अंतर है संबित? नंबर ऑफ एन का साइज, अगर एन का साइज 30 से ज्यादा होगा तो लार्ज सैंपल साइज, वहां पे हम जेड टेस्ट यूज करेंगे। अभिजीत स्वयं। सर एक में पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, एक में नहीं पता। अरिजीत पाल। सर एक में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हैं और एक में सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। One is large sample test, another is T test. Okay, and please remember that is because of the sample size. Now ये दोनों में लास्ट जो लिखा है तथागत, लास्ट दो फॉर्मूला में क्या अंतर है? सर यहाँ पे एक सैंपल है पहले में और सेकंड में दो सैंपल हम लोग। Wow, hope you have not forgotten this formula. This will be very easy cakewalk for you. Now I am requesting you, please give me quality time. I'm giving you some selected questions. ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको बोलना है which formula and why. Get ready. So first we'll be starting with this. I request you don't look at the solution which is a bit confusing. All of you read the question quickly and first tell me whether it is one tail or two tail, left tail or right tail. Raise your hand. Parijit, take over. सर वन टेल होगा सर, लेफ्ट टेल। All of you agree? All of you? I think right tail होगा। Yes. Right tailed होगा, right tailed. It is right tail. Parijit, why you could not understand? ओ सॉरी सर, राइट टेल होगा। मैं गलत इंटरप्रेट कर लिया था सर, सॉरी सर, राइट टेल होगा। आराम से, इजी, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट डियर, ठीक है? तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्नेहाल? वो जेड वाला सिंगल पॉपुलेशन, वन सैंपल वाला। One sample वाला। व्हाट इज द फॉर्मूला? पीएलई, ऊपर देख के, सीलिंग को देख के बोल, ऊपर सर देख। नहीं याद, नहीं याद। अरे x माइनस q बाय सिग्मा बाय रूट n. सबसे इजी फॉर्मूला, you should remember this. Okay, now all of you please remember this.
ये पढ़ो क्वेश्चन फटाफट. तथागत, you are ever ready for every question and remove your hand symbol. All of you requested participate. बाकी लोग क्या कर रहे हो? Sushrut, you are there. यस सर. पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, गुस्से में हो क्या? नहीं सर नहीं. बोलना. मिर्जा बोल. सर ये लेफ्ट टेल टेस्ट है क्योंकि कंपनी वो कर रही है कि 14,500 है प्रेस का, लेकिन अगर उससे नीचे हुआ तो कंपनी के लिए घाटा है. लाइफ ऑफ प्रिंटिंग प्रेस है ना, ज्यादा है तो बेटर है. करेक्ट. जो मिर्जा साहब ने बोले सही है. सो व्हिच फॉर्मूला वी शुड अप्लाई मिर्जा? सर वही सिंगल वाला सैंपल टेस्ट. वेरी गुड. ये जो 1% सिग्निफिकेंस लेवल क्यों लिखा है यहाँ? सर वो टैबुलेटेड वैल्यू को सर चेक निकालने के लिए फिर कंपेयर करेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू. हाँ, टैबुलेटेड वैल्यू कितना है? 1.96. 2.33. अरे 1% में कितना? 2.58. सर 2.33. 2.58. मिर्जा तो कंफ्यूज कर रहा था, फुल मार्क नहीं मिलेगा. 2.33. सर 2.58. 2.576. मिर्जा तुझे फुल मार्क नहीं मिलेगा. सर 2.33. 2.33. क्यों गलत बोला? सर वो मैं टोटल का देख लिया था. उसके बदले का मुझे दे दीजिए. इससे क्या रिलेशन, उसका सिग्निफिकेंस? वही तो बोला था सिंगल वन टेल वाला ना. यस सर यस सर. अभी ये देखो, दिस इज लेफ्ट टेल, राइट टेल, टू टेल. सर लेफ्ट टेल. Wow, Nikita, thank you. If movies run for more weeks, more days, better. Higher the better, less is bad. Same, exactly ditto. Last three questions, exactly ditto. Now, ये last question दिख रहा है? अभी it is showing, remember, Abhijit? Sir, this is two-tailed. क्यों? सर ज्यादा होने से भी खराब है, कम होने से भी खराब है. नहीं. सर लेफ्ट टेल्ड है. अभिजीत, ये सोच ले क्या 3 क्वेश्चन हो गया वन टेल से, जो आएगा 2 टेल वाला होगा, ये सोच ले? नहीं सर एक्सप्लेन करूं क्या? हाँ बोलना. अरे सर सुनो, अगर कम होगा. सुनो, योर लॉजिक इज टू सम एक्सटेंट करेक्ट, बट सो स्लो थोड़ा. योर इंटेंशन इज टू हैव ब्राइटनेस, ठीक है? अगर कम ब्राइटनेस है तो दिस प्रोडक्ट you are not going to send to market. You are trying for higher brightness in lumens. पहले तो मार्केट स्टैंडर्ड था 750, ठीक है? ये 750 क्या है मिर्जा? एक्स बार है या म्यू है? ये 750 एक्स बार है या म्यू है? म्यू. दोनों तरुण, ये दोनों का अभिजीत और मिर्जा का खाता में -2 डाल. वो कुछ नहीं है 750, बस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया है. 750 कुछ नहीं है सर. 954 minus 960 divided by 1.84. देखो अभिजीत ब्योरा सुना को. सर अभिजीत ब्योरा को +2 आ दिया जाएगा. अरे देखो ना अभिजीत ब्योरा कैसे बोल रहा है. अभिजीत, which is mu, which is x bar? सर mu is 954 and नहीं, उल्टा बोल दिया. This you are finding, this 954 is what? सर x bar. This is x bar. This is x bar. अभिजीत ब्योरा, this is x bar. ठीक है? So अभिजीत स्वाई आराम से, don't be over confident.
क्यूटी में फुल मार्क मिलेगा, फुल 0 भी मिलेगा, ठीक है, इधर वे। दिस इज इजी, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, ये भी आपको याद होगा। एंड लेट मी टेक यू टू वन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। या होप यू रिमेंबर दिस, ऑल ऑफ यू रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट। ये काई स्क्वायर टेस्ट में, स्नेहाल यू आर देयर? Yes, sir. ये काई स्क्वायर टेस्ट में नॉल हाइपोथेसिस को कैसे लिखते हैं? जैसे एग्जाम में टाइम बाकी दोस्त लोग व्हाट्सएप करेंगे ऐसे ही लिखेंगे। सर भूल गए, इतना दिन पहले पढ़े थे ये। सर अरे फिर सर, रैंक बनाते थे ना, रैंक देते थे। इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट है या नहीं वो दिखते हैं। अरे नॉल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट कोई तो बोलो। इंडिपेंडेंट सर। सर There रिलेशनशिप is देता है no dependence, there is no dependent, there is no association. Earlier test, T test और J test में there is no difference, and chi-square test में there is no dependence. ये वर्ड को रट लो, ओके। टीना, अगर chi-square टेस्ट का एग्जाम्पल हमें मिलता है, फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लिखेंगे। का ई वैल्यू निकालेंगे। यस सर। ई वैल्यू कैसे निकालेंगे मिर्जा साहब? सर फॉर्मूला इसका राइट टोटल इनटू कॉलम राइट टोटल नहीं, रो टोटल। टोटल बाय ग्रांड टोटल, ठीक है। जो ई वैल्यूज मिल गया, इसके बाद विल बी गोइंग फॉर अनदर टेबल व्हिच इज कॉल्ड काई स्क्वायर टेबल, ठीक है। काई स्क्वायर टेबल में रसलीन यू आर देयर? रसलीन का यस सर, नेटवर्क यस प्रॉब्लम। सर। क्या क्या कॉलम्स होंगे? फर्स्ट ओ, देन देन सर ई, ई, सर देन ओ और ई मल्टीप्लाई करेंगे, ओ माइनस ई सर, माइनस करेंगे, फिर ओ और ई का स्क्वायर, ओ ओ माइनस माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। हाँ, ये जो लास्ट कॉलम रहा अभिजीत बेवरा, ये लास्ट कॉलम को टोटल को क्या बोलेंगे? सर लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम टोटल को क्या सर बोलेंगे? एक्स स्क्वायर होगा 1.905। तो रट लिया आंसर को? अरे सर इतने घोषित थी तड़ी मन रही थी। अरे लास्ट कॉलम टोटल को क्या बोलते हैं बोलना? 1.7। सर ग्रैंड टोटल। अरे सर वो कैलकुलेटेड काई वैल्यू स्क्वायर निकलेगा ना। ये बोलना, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू बोल 1.79। I'll be asking you what is the name of your wife, you will tell 4 बच्चे। अगर तो लास्ट कॉलम टोटल होगा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू, and this will be compared with Abhijit Behra what? tabulated tabulated value कैसे निकालेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे? सर नंबर ऑफ n-1 करेंगे, रो -1 इनटू कॉलम। स्नेहल स्नेहल कहाँ पर है तू? हमारे प्लेनेट में या कहीं और है? n-1 नहीं रे, you are रो over -1 कॉलम r-1 into c-1 रे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर। स्नेहल बेटा आराम से, सर भूल गए, इतना दिन हो रहा है यार ना। ठीक है। सो ये देख के टेबल वैल्यू निकालो और अकॉर्डिंगली कंक्लूजन भी लिखो। होप यू रिमेम्बर दिस एग्जांपल, ओनली 2 ही एग्जांपल देंगे आपको। ये जो टेबल दिख रहा है साइंस, कैन यू नेम द 2 फैक्टर्स? व्हाट आर द 2 फैक्टर्स वी आर वेरीफाइंग whether they are dependent or not? तो फर्टिलाइजर यूज करके कुछ फायदा हो रहा है या नहीं? दोनों फैक्टर, एक तो फैक्टर बोला ना, दो फैक्टर। सर एक तो ओनर लोग सर फर्टिलाइजर और एक हो जाएगा लैंड का कल्टीवेशन कैसा है? ownership of land. Use of fertilizer whether it is dependent on ownership status of land. Okay, ये लिखो। That null hypothesis and last conclusion both are bit important. Okay, now let me give you the last example. ये संबित पाल, यस सर, यस सर। जेड टेस्ट लग रहा है या टी टेस्ट टाइप लग रहा है ये क्वेश्चन?
सर ये जेट टेस्ट होगा, 2 सैंपल जेट टेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। ये 2 सैंपल वाला, ठीक है। एनीबॉडी हु कैन टेल मी द फॉर्मूला बाय चांस? न्यूमरेटर में क्या रहेगा टीना? सर x1 x1 minus minus x2 x2 x1 bar divided minus by x2 bar divided by sigma 1 square by n1 plus sigma 2 square by n2 whole under root. Okay, please remember this. I think ये काफी है from parametric test. Now I would take another 15 minutes. I request you please have patience for at least 15 minutes so that we can discuss the next important thing before exam, which we had covered. Is my screen visible? Yes. yes sir. Okay. Now, this very recently we had covered ANOVA and F-test. Now we'll be covering selectively as revision class. ANOVA, as you know, stands for something called what? Analysis of variance. This is applicable when you are to compare more than 2 samples, 2 groups, 3, 4, 5. In that case, you cannot apply t-test. T-test is limited to 2 groups. Okay, and here you are checking, verifying, calculating, comparing 2 type of variations, 2 type of variances. What are those 2 type of variances, Mirza, Nikita, Tina, koi bhi? Inter and intra. Very good. Anybody who can clearly, confidently explain the difference between inter and intra variances? Asia, wow, very good. Sir, inter means it will be between or the sample, or intra means it will be within the sample. Wow, within and between. Wow, very good. Sambit, all of you agree? Inter, intra is between and within. ये दोनों variance का अगर हम ratio निकालते हैं, what that ratio is called clearly? F formula. Very good. So ratio of sigma 1 square by sigma 2 square is called F calculated value. F calculated value अगर मिल जाता है, we'll be comparing with F tabulated value. But will not be troubling you and will be giving you ready-made computer output. Computer output को देख के ही आपको interpret करना पड़ेगा. So ANOVA टेस्ट में से 1 या 2, 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन कंप्यूटर आउटपुट should come, I think. Okay, so just to go quickly. ANOVA तो सर लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? Are you stating the question? No, I'm asking sir. ANOVA में अभी देखना, 5 मिनट रुक जा, फिर से don't forget this question. Please do ask me this same question after 5 minutes. Okay, रुक जा. हाँ? ये यहाँ null hypothesis जैसे मैंने बोला, more than 2 samples जो है, suppose 4 samples को compare कर रहे हो, so mu1 equals to mu2 equals to mu3 equals to mu4 होगा. This is null hypothesis. Alternative means not equal. ठीक है. Now what we have discussed so far, let me skip this, and you should please remember this is nothing but sigma 1 square by sigma 2. इतना ही याद रखो. Simple. F means sigma 1 square by sigma 2 square. Okay, and you can write also sigma b square by sigma w. Okay, cyan, B stands for what? Sir, first one B stands for what? between. So between column Between and within. W stands for within. Okay, ये भी लिख सकते हो बेटा, नहीं तो sigma 1 square sigma 2 square लिख सकते हो. Okay, this much you remember. Okay, this we can skip because ये computer practical नहीं होगा एग्जाम में. जो होगा यहाँ से डिस्कस करेंगे.
as you may recall, I had introduced y cap in place of y, just to remind all of us that what we are estimating is not the actual value. It is a predicted estimated value. Y cap may be slightly different from y, but ये दोनों में अंतर should be minimum. That's why we differentiate square of deviation, and from that we get normal equations. Now, can I ask you some short question? Just raise your hand, no prompting. What is the difference between small r and capital R? What is the difference between small r and capital R? Abhijit Swami. So small r is correlation coefficient and capital R is coefficient of determination. Nah, re. Subhasri. Sir, small r equal to coefficient of determination, capital R equal to coefficient of regression. Small r square is coefficient of determination, and this is for bivariate relation only. Capital R is for multiple correlation and which is used for multiple regression. Okay. Capital R square will tell the total contribution of all independent factors taken together for y. Small r square, all of you remember, coefficient of determination as told by Subhasri. Right? This you need to remember. Now, this is not required. Yes, please, Abhijit. The small r is for? Small r square is coefficient of determination for bivariate relation. Now, if you remember, हमने बोले थे this mean sum of square. How it is obtained, Snehal? This value is sum of square divided by degrees of freedom. Please remember this. Okay, this is called sigma square 1 or between, and this is called sigma square 2 or W. ये दोनों का आंसर ये होगा. Okay, please remember this. Now, from this second output, what are the important values we should be careful and note particularly? R square P. R square R individual square P and P value. P दोनों. Coefficients. Total Individual and final. And individual Individual P. Okay. And also, sir, the coefficients for the equation. Coefficients are also important. Okay, this is very important. And what is the role of this Samit Pal? Degree of freedom plus 1 equals to n. The number of data points or sample size. That means that question might have used n number of data, 9 data points. Okay. Now, just to check whether you are listening to me or not, Himala, you are there? Yes, sir. Can you tell me, is it possible to write regression equation looking at this output? No, sir. Why you are not participating, dear? Anjali Sahu, you are there? Anjali, Chitwan. You remember my question or you have forgotten my question? कैसे होगा यार? Chitwan, you are there? अरे यार. Yes, sir. आंसर बोलना. Sir, 70 plus 0.421. मिर्जा कहाँ से शुरू करेंगे? 70 से शुरू करेंगे. So y is equal to. हाँ, चितवन. थोड़ा सा छूट गया. You should have started y equals to 70.066. You are correct, partially correct, but you will not get full mark, na? Yes. You are getting it. Yes, sir. So, what important points? R square is required. These p values are required, and these coefficients are required. And the regression equation, either you write y equals to this, or you can write the
notation terms also. Any question up to this? Feel free and ask me if anybody having doubt. All of you clear? Next slide, I'm going to ask you some questions, particularly those who have not switched on video. Please participate. I'll ask you some questions from exam point of view. Okay, I think all of you remember question number 13.40. ये क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. Pragya Mandal, you're there? Pragya, Soumya, switch on video. Sir, I've joined through phone, sir. Okay, so first बीट क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. क्या करना पड़ेगा? सर पहला तो 3 पार्ट्स है. पहला रिग्रेशन इक्वेशन लिखना है, फिर उसमें बताना है कि कितना वेरिएशन है सेल्स ग्रोथ में. अरे फास्ट ना तो सारे से खत्म कर रही है. अच्छा, फास्ट का क्या आंसर होगा? राइट. रिग्रेशन इक्वेशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 70.006 प्लस 0. वेरी गुड, डन, थैंक यू. प्रज्ञा, सेकंड बीट क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर. हाँ, वर्ड और आंसर बोलना. इससे चलेगा रे. शुभश्री, सर अरे सेकंड बीट वर्ड और आंसर बोलना फटाफट. आज कर वैल्यू लिखेंगे, उसके वेरी बाद गुड. इंडिविजुअल फी, Stop. फाइनल फी. अरे यू आर Sorry, टेलिंग sir. रामायण महाभारत एवरीथिंग. ओनली सेकंड बीट का क्वेश्चन आंसर करना सारे. शुभश्री, व्हाट इज सेकंड बीट आंसर? आज कर वैल्यू. हाँ, प्रज्ञा, व्हाट इज द सेकंड बीट? अरे शुभश्री हैज जस्ट नाउ टोल्ड रे. अरे सर. एक मिनट रुक रे अभिजीत, क्या करें प्रज्ञा को? शुभश्री, यस सर. अरे टेक द नेम ऑफ प्रज्ञा. वाई सी प्रज्ञा, सेकंड बिट का आंसर आज कर वैल्यू हम लोग निकालेंगे. कहाँ कितना है बोलना? आज कर इक्वल टू 92.6%. प्रज्ञा, व्हाई यू आर नॉट गेटिंग? कैसे होगा बोलना? आर यू क्लियर नाउ? एटलीस्ट अभी तो हाँ बोलना. हाँ, यस अभिजीत बेवरा. Sir, I was saying that same answer. हाँ, अभिजीत बेवरा थर्ड बीट. Sir, creativity, maths, constant, abstract. Except this, okay? Yes, sir. All of you agree? Yes, sir. PLE, what is the meaning of D bit? What is the answer? Overall model significant. Sir, p-value. Overall p-value. Final P value. Yes, sir. You remember that? Was it less than 5%? No, sir, I don't. Yes, sir. Yes, sir, it was. It was less than 5%. So yes. yes, it is significant. आपको लिखना है. Yes लिखो, मार्क लो. Okay, Soumya madam, last bit question. Soumya Singh. Yes, sir, I'm here, sir. ना बोलना last bit. सर बता रही हूँ सर. क्या करना है? Just explain कर देना. Calculate नहीं. सर बेसिकली इसमें 4 टेस्ट है. वो बोल रहा है क्रिएट मैकेनिकल एब्स्ट्रैक्ट और मैथ में सेल्स ग्रोथ बताना है. और अरे ना, I think you are not clear. Tina, address to Soumya. सौम्या, you have all the variables. तुमने जो इक्वेशन निकाला था. हाँ, मैं बोलने. फर्स्ट बीट में जो इक्वेशन मिला था सौम्या मैडम. सर, I have to put it, sir. Yes, sir. अरे वही तो बोलना. वैल्यूज टू बी पुट इन इक्वेशन व्हिच यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड. बस. ऑल ऑफ यू क्लियर? एनी क्वेश्चन? ऑल ऑफ यू क्लियर? सो नाउ ऑल ऑफ यू रिक्वेस्टेड टेक स्क्रीनशॉट
This is table 1 in regression output, ANOVA output. You will have got 3 components, 3 tables. 1, model summary. ये screenshot लिया. Yes, sir. Yes. Next is coefficient table and ANOVA table. 3 tables. ये तीनों लिया screenshot. Yes, sir. Okay. Arijit, now if these questions are like this, first PT question तो सबको पता है. Science hope it is okay. Yes, sir. Science what is the second bit? Screenshot है तेरे पास? नहीं सर, नहीं दे पाए. बढ़िया. कोई बोलो? Anybody has taken by chance? Mirza? 0.872. All of you agree? Tina? Yes. Correct? Nikita, you are there? Yes, sir. Third bit word. बोल क्या होगा? Third bit. सर एक मिनट क्वेश्चन देख रही हूँ सर. ये हमने बैक कर दिया. बोलो. सर 0 सर एज लेंगे. सर Yes, एज sir. वाला है सर. Only age one. बाकी कुछ नहीं होगा. The age is significant है बस. Only one significant, others are not significant, right? बस एज होगा. रसलीन, लास्ट बीट का मीनिंग क्या है? रसलीन कौर, यस सर. लास्ट बीट का आंसर है, पता है? तथागत, Yes, sir. We need to find out the value of n. कितना स्क्रीनशॉट लिया था, नहीं लिया था? Yes, sir. 9 था तो 9 plus 1 1 कर देंगे, 10 10 हो जाएगा. 10. और किसको पता है ये जो डी बीट का? एनीबॉडी रिमेम्बर्स डी बीट? अरे डी बीट का आंसर बोलो ना तथागत का कोई भी. Sir, 0.10. वेरी गुड, वेरी गुड, यही है. ओके. somebody was asking whether ANOVA में से लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा नहीं मिलेगा. कौन बोला था? अभिजीत. सर मैं बोला था सर. हाँ, अभी दिख रहा है. सर ये ये जो- क्या ये टेबल दिया रहेगा, हम लोग को ये आंसर करना होगा ना? और कौन करेगा आंसर? तेरा टीचर करेगा? नहीं मतलब मैं पूछ रहा हूँ. नहीं, ये जो 5 बीट है लॉन्ग क्वेश्चन लायक नहीं है. हाँ सर. तो फिर ये किए थे नहीं किए थे पहले? हाँ Yes, सर. sir. ठीक है. So I think with this I should stop. And if you got any question, query, advice, suggestion, you can please ask.